Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, all. So, we were reading the summary and asking questions at the same time for you to understand what the story is about. And for every detail, we are taking chapter wise. Yes. Ma'am, आज activity day था तो I would like to present a presentation. मैम बोले था आज एक्टिविटी क्लास पे है मैम, तो पीपीटी बनाए हुए हैं मैम। एक्टिविटी क्लास करोगे? चलिए ठीक है. What is the activity about? मैम प्रेजेंटेशन है मैम, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी। Okay. Do that. Want to share screen? ओके मैम। मैम my screen is visible, मैम। Yes. You are not audible. Raj Verma, you're not audible. What happened, Raj Verma? डिस्कनेक्ट हो गया मैम। ओके खुशबू, तुमको कुछ करना है? टाइम मैंने प्रेजेंट किया था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे। मैम मुझे करना है स्वाति गुप्ता। चलिए. ओके Is it a PPT? What is it? अपने आपका अनम्यूट कीजिए ना, आवाज नहीं आ रहा आपको। अरे अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करो। Hello everyone, my name is Swati Gupta. I present my presentation of Indian civilization and culture by Mahatma Gandhi. Introduction of Mahatma Gandhi. He was a man considered on the great ages and first he was held and another Buddha, another Jewish Indian called him the father of the nation. Mahatma Gandhi by name of Mohandas Karamchand Gandhi, born October 2, 1869. 1869 Promandar, India, die January 30, 1948 in Delhi में.
in Indian lawyer, politician, social activity, and writer, who became the leader of the nationalist movement against the British rule of India, such as he came to be considered the father of his country. Gandhi is internationally esteemed for his doctrine of non-violence protest, जो सत्याग्रह कहलाता है, to achieve political and social processes. In the eye of millions of his few follows India's, Gandhi was the Mahatma, great soul, the unthink adropt abduction, unthink and think of adoption of the huge crowd they gathered to see his all along the route of his tours made them a servo-ordeal deal. He could hardly walk during the day of rest at night. The worries of the Mahatmas, he write, are not only the Mahatmas, his farm a separate spread worldwide during his lifetime and only increased after his death. The name Mahatma Gandhi is now only of the university most universally recognized on earth. Indian civilization culture about Mahatma Gandhi is in his essay Indian civilization and culture has described the importance of Indian civilization. The sound founder of Indian civilization has successfully withstood the passage of time. The best civilization, which has the tendency to privilege materiality, cannot match the Indian civilization that evaluate the moral beginning. Civilization is unparalleled and cannot be beaten in the world. The seeds sown by our ancestors were deep rooted and had developed developed miraculously in a big tree with many of its branches separate over the heart of India. Rome, Greece, and many other centers of the ancient civilization were determined and determines or no longer exist in his former glossy. Japan has become westernized and China has also shifted from its past culture. Civilization points out to man the path of duty, performance of duty, and ob- observance of morality are exchangeable. It is a charge against India that her people are uncivilized and they do not adopt any change. It is a charge really against our military. In the midst of such allegation, India remained firm and immovable, and that is her glory. Mind, it is a mind is a restless word is what as a factor. The more it gets, the more it want and still remain unsacrificed, such as our ancestors set a limit to our endurance, the pursued us against luxury and PCS for them. Last cities were wonder
and trapped. Wonder and trapped. People would not be happy here because there would be gangs of thief, robber, protest, and anti-social elements here. The Indian civilization elevates the moral beginning, whereas the Western civilization is the protest immorally. His his latter is godless. The former is based on a belief in God. The ancient civilization is an imperative instances upon an indefined multiplicity of human want, whereas modern civilization is just as the reverse. In the best wonderful describes in things material have been made. In India, similarly, Hinduism has made a still more marvelous describes in these things of religions, the spirit and the soul. There is something in Hinduism that has kept alive of till now. It has witnessed the fails fail of so many civilizations like Babylon, Syria, Egypt, and so on. Our civilization, culture, and Swaraj depend upon restricting wants and self-denial instead of multiplying our want and self-indulgence. European civilization is situated for the European and will renew us India. If we copy it, civilization is the real sense of the term, consists of the deliberate and voluntary registrations of one, not in the multiplication. As already mentioned, it is necessary to arrange our physical and cultural circumstances so that they not become an obstacle in our service to humanity, and all our energies should be concentrated to develop them. Thank you, ma'am. आप बताइए, what have you understood by this? स्वाति गुप्ता, Yes, ma'am. आप इन शॉर्ट बताइए कि क्या समझा आपने. मैम, इंडियन सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि अपना खुद का कल्चर होना चाहिए, किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, और खुद की प्रथा जो चलनी चाहिए वो चलती रहना चाहिए. और आई थिंक इस प्रेजेंटेशन से ये समझ आया कि इसके अंदर जो महात्मा गांधी जी ने कहा है कि आगे खुद इंडिपेंडेंट और अपना कल्चर को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, बंद तो नहीं इसमें एक टर्म आता है, महात्मा गांधी has said that the mind is like a restless bird. इससे वो क्या बताना चाहते हैं हम? वो इससे ये आप क्या समझते हैं? वो ये बताना चाहते हैं कि मैन कब मतलब कि हमें कभी बैठना नहीं चाहिए, लगातार अपनी बातों को आगे रखना. नहीं तो कोई बता सकता है कि इसका मतलब क्या हुआ? याद था भूल गए. Can you repeat this sentence, ma'am? That sentence. Mind is like a restless bird. इससे महात्मा गांधी क्या बताना चाहते हैं?
मैं महात्मा गांधी बोलना चाह रहे थे इस लाइन से कि हमारा जो माइंड है वो कभी शांत नहीं बैठता, वो हर वक्त कुछ ना कुछ अपने कल्चर के बारे में और हिस्ट्री के बारे में सोचता ही रहता है, फ्यूचर को लेके। और क्या कहते हैं? और मैं महात्मा गांधी का कहना था कि जो हमारे एंसेस्टर्स और हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स है, जो प्रथा जो भी रिचुअल्स चलाते हैं वो हमारे बीट रूट है और उसी को हमें आगे लेके चलना है, अपने रूट्स को ही आगे बढ़ाना है। और अगर अच्छे कल्चर्स हमें और कंट्रीज में दिखती हैं तो वो भी हमें अपनाना चाहिए और अपनी कल्चर्स को छोड़ना नहीं चाहिए। Mind is a restless bird. Mahatma Gandhi tries to say that the mind, anybody's mind is like a restless bird. It is never satisfied. It always wants more and more and more. The more it wants, the more unsatisfied it is. It is always dissatisfied and it always wants more. So he is saying that it is good to explore. ये अच्छी बात है, आप एक्सप्लोर करिए, आप बहुत चीज को जानिए, आप फॉरेन कंट्रीज में भी जाइए, उनके कल्चर को देखिए, समझिए, adapt what is good for you, do not take what is not good for you. He says go everywhere, explore करिए, research करिए, but do not forget your own culture. मैंने पहले भी इसको एक्सप्लेन किया था एंड ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, the Indian culture is God made and the Western culture is man made. इसको एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन। बताया क्या था ना, इंडियन कल्चर गॉड मेड है और वेस्टर्न कल्चर मैन मेड है। एक्सप्लेन दिस। राज वर्मा, आर यू रेडी? मैम नेटवर्क इशू हो गया तो उसके डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ चलिए, अभी बोलिए और मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। चलिए मैम क्वेश्चन को एक बार रिपीट कीजिए तो मैम फिर से एक बार। इंडियन कल्चर इज गॉड मेड, वेस्टर्न कल्चर इज मैन मेड। एक्सप्लेन दिस। मैम इंडियन कल्चर मतलब गॉड मेड इसलिए है क्योंकि इंडिया में जो भी मतलब कुछ हुआ, यहाँ पे बहुत सारे भगवान का अवतार हुए जो हमें आके बताएं कि हमें कैसे मतलब जीना है, समाज में कैसे रहना है और किस टाइप से हमें मतलब सभी से बिहेव करना है, अपने कल्चर को कैसे आगे बढ़ाना है। इसलिए इंडियन सिविलाइजेशन को गवर्नमेंट बोलते हैं। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन है जो हम इंसानों ने मिलकर खुद बनाया उस कल्चर को, कि हमें वो कैसे रहना है, किस तरह से क्या करना है, ये हुआ वेस्टर्न कल्चर में। उसका ये भी एक एक्सप्लेनेशन है कि द इंडियन कल्चर is God made and it is passed on from one generation to the next generation. तुमने जो कुछ भी सीखा है, you are learning it, you have learned this from your parents. आपके पेरेंट्स ने जो कुछ भी सीखा है वो अपने पेरेंट्स से सीखा हुआ है, तो वो चीज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एंसेस्टर्स से आप सीख रहे हैं, वो कायम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। वो प्रथा जो चली आ रही है वो पूर्वजों से चली आ रही है, हमारी आज की नहीं है, कल की नहीं है, ये सदियों पुरानी है। और उस प्रथा को एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर करती चली जाती। यहाँ पर जॉइंट कल्चर, जॉइंट फैमिली का कल्चर है और सब इकट्ठे रहते हैं, साथ रहते हैं। और कल्चर जो हमारा कहते हैं गॉड मेड है, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द ऑलमाइटी एंड एवरी कल्चर is passed on from one generation to the next generation. But in Western culture, this is not so. There isn't any family ties. People do not live together. इंसान बच्चा जबकि 18 इयर्स का जब हो जाता है तो वो खुद घर छोड़ के चला जाता है। वहां साथ रहने की कोई प्रथा नहीं है, कोई कल्चर नहीं है। इसलिए एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को आसान नहीं कर सकता है, वो अपना खुद कल्चर बनाता है। And Mahatma Gandhi has also said that Indian culture has been passing on its values, cultural values to the next generation, but the Western culture, they may have good cultures, but लेकिन वो सब कबाड़ में कहीं पड़ा हुआ है।
और वो यूज नहीं हो रहा है, इसलिए कि आगे किसको कैसे बढ़ाएगा। उसका तो जब 18 इयर्स का बच्चा हो जाता है तो वो खुद घर छोड़ के चला जाता है, तो व्हाट विल ही नो कि व्हाट इज हैपनिंग। उसके फादर भी 18 इयर्स में चले गए थे, उनको भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो दिस इज देयर कल्चर, वो हम लोग के कल्चर के से बिल्कुल अलग है, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास नहीं होता है, इसीलिए किसी काम का नहीं रहता। और वो एक कबाड़ खाने में, जो दे हैव मेड गुड गुड कल्चर्स, लेकिन यो यूज नहीं हो रहा है, एंड इट इज ऑल लाइंग इन अ डंजन हीप, it is not being transferred to the next generation. So that is why it is said that Indian culture is God made, whereas the Western culture is man made, and that is why it is kept in a dungeon heap. Dungeon का मतलब होता है कबाड़ खाना, heap मतलब कि बिल्कुल कबाड़ बना हुआ है और useless है. Okay, Raj Verma, make your presentation. Okay, ma'am. Good afternoon, ma'am, and my dear friends. I am the student of BSc-IT second year, and I would like to present my views on Indian civilization and culture. This is a cultures and civilization, and see culture and civilization of India. Picture I shown. And introduction. The big idea, Indian civilization first developed on the Indus River. Includes mountains, great rivers, and heavy seasonal rain. Harappa civilization developed along the Indus River. The Aryan invasions of India changed the region's civilization. Basic chronology. In 3000 BCE, founding settlements appeared along the valley of the river Indus in what is now Pakistan. And 2500 BCE, high point of the Indus Valley civilization, and 2000 BCE, some Indus sites showing signs of decline. And 1500 BCE, the Aryan invention. The Indus Valley culture. The people of Indus Valley were mostly peaceful farmers. They built large cities with the orders, steel and bricks made all the same size. This indicates they had a strong central government. This statue is probably of Christ of King. Priest. पुजारी हुआ जो पूजा पाठ कराते हैं. Indus Valley civilization. Archaeologists discovered two 4,000-year-old cities, 400 miles apart along the banks of the Indus River in Pakistan. These expertly constructed cities were parts of an advanced civilization comparable to ancient Mesopotamia and mysterious signifiers. Example of multitudes of Harappa clay seals whose meaning still eludes us. Indian civilization and culture about Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi is a popular known as a Bapu or the father of the nation. He was born in the province of Gujarat on 2 October 1869. He was a more spiritual leader than a politician. He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence. From 1950 till 1948, he completely dominated Indian politics. He died at a hands-on fanatic on 13 January 1948. Indian civilization and culture is written by Mahatma Gandhi. In this essay, he compares Indian civilization to civilization of the West and finds it superior to all. Our Indian civilization is the most ancient, the most vital, and the longest surviving of the all civilization in the world. So our civilization can teach the world. Therefore, we need not copy of Western civilization. According to Gandhiji, mind is restless bird. The more it gets, the more it wants. Still, it remains always unsatisfied. The more we indulge in our patience, the more our mind becomes uncontrollable. Lastly, Gandhiji said that it behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization, even as a child clung to his mother's breast. Visual summary.
the Harappan civilization began in Indus River Valley. Tourism and Buddhism both developed in India. Indians made a great advance in art, literature, science, and other fields. Thank you, ma'am. That's all. Anybody else? Yes, ma'am, I have to present. Sanket, yeah. Is it a PPT? Yeah. Yes, ma'am. Good afternoon, all of you. My name is Sanket Kumar Singh, and today I will deal with the given topic, Indian civilization and culture, which is written by Mahatma Gandhi. In this PPT, I will cover what is Indian civilization and culture, how Indian civilization is different from other civilizations. Thus, the Indian civilization can be completely westernized. Indian civilization is the best civilization of the world. No other civilization can beat Indian civilization. It is a way that takes the people on the right place to do the right work. It improves the quality and morality. Our civilization and our culture taught us how to live our lives, and this makes us more beautiful and strong. Indian civilization is based on spirituality. India is primarily the land of religion. Rest of the world laughs on Indians that the people of India cannot change their lifestyle and culture. But according to Mahatma Gandhi, this is the beauty of our country. We can do everything that the Western people does, but our civilization does not give us the permission to do so. Mind is, according to Mahatma Gandhi, mind is like a restless bird. The more it gets, the more it wants, and still remains unsatisfied. Our ancestors therefore set a limit to our indulgence. A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. Western civilization is destructive, Eastern civilization is constructive. Western civilization is without a goal, whereas Eastern civilization has a goal before. Now, the point comes that does the Indian civilization can be completely westernized? So it is necessary to adopt the methods and instruments of Western civilization. On the other hand, we have to save our civilization. Indian civilization had outlived so many changes through thousands of years. While ancient civilizations of Greece, Rome, and Egypt had become extinct, the wave of modern civilization has been passing through India, and also the Indian civilization is being affected. Under the influence of another civilization, it may be necessary to adopt our own civilization in certain respects to our new environment. Modern civilization aims at the eradication of space and time. All are so intent upon earning bread and butter that they have no time for anything else. Modern civilization makes them materialistic and makes them concentrate upon the means of multiplying comforts. We have to we have to adopt only the good habits and the techniques from the Western civilization. We can also adopt everything from the Western civilization as like Rome, Egypt, and many more, but it will result in the extent of Indian civilization. That's all, ma'am. Thank you. Okay. Fine. So you need to work out on, this is an important essay. So everybody has to make a presentation. Those who have already done, that's fine with them. So in the last class, we have a, hello? हाँ क्या कुछ बोल रहे हो?
Hello? All right, then let us continue. We have 15 minutes more to go. We were reading Animal Farm Summary, and we had finished a great deal. The last class, who was reading it? The Ghost of Yes. Snowball, no? Yes. The Ghost of Snowball. राज वर्मा, क्या मतलब होता है Ghost of Snowball? ये अब्बा उड़ाता है नेपोलियन कि जो कुछ भी जो हो रहा है स्नोबॉल का भूत। स्नोबॉल का हाँ, घोस्ट आके टकरा रहा है। स्नोबॉल आके और बताता है, रात में आता है और पूरे जानवर को भड़का के चला जाता है। वो तो जितनी भी जो हो रहा है नेगेटिविटीज, वो सारा उसका जड़ कौन है? उसका जड़ स्नोबॉल है। तो वो वहां से चला गया है, फिर भी वो उसके पीछे पड़ा रहता है और उसको बदनाम करता रहता है। अब आफ्टर फ्रेडरिक्स अटैक, जब फ्रेडरिक जो उसका नेबर है वो अटैक करता है, फिर क्या होता है? पढ़िए, समरी रीड। पढ़िए, कोई पढ़िए। After Frederick attack, animal farm with more than 50 men, they set the mill on fire and the animal get furnace. They attack back, but many animals die. They win, but many of them are wounded. The mill is destroyed. Animals are depressed इसका about मतलब क्या the हुआ? एनिमल फार्म विथ मोर देन 15 men. animal एनिमल farm फार्म में किसके साथ? 15 मैन के साथ मिल करके क्या हुआ? दे सेट द मिल ऑन फायर. जो विंड मिल जो बनाया गया था उसमें लोगों ने आग लगा दी. एंड द एनिमल्स गेट फ्यूरियस. और उस विंड मिल को बनाने में काफी मेहनत लगी थी. सो दिस एनिमल्स बिकम फ्यूरियस. फ्यूरियस मतलब होता है दे एंग्री, गुस्सा हुए सब बहुत बहुत नाराज हो गए कि उनकी पूरी मेहनत पे पानी फिर पानी गया. फिर गया. तो दे आर वेरी एंग्री. Why they are angry? Because they attack back, but many animals die. Die. और वो लोग फिर वापस अटैक करते हैं उनपे, और उसमें क्या होता है? बहुत सारे एनिमल्स की मौत हो जाती है. They win, but many of them are wounded. तो उस लड़ाई में एनिमल्स जीत जाते हैं, लेकिन बहुत जख्मी भी हो जाते हैं. और मिल क्या होता है? द मिल इज डिस्ट्रॉयड. और जो मिल जो बना था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया. एनिमल्स आर डिप्रेस्ड. और एनिमल्स बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गए, चिंतित हो गए बहुत. हाँ, बिल्कुल वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए. अबाउट व्हाट? अबाउट दैट. बट नेपोलियन इंसिस्ट ऑन सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री. लेकिन फिर भी नेपोलियन क्या कहता है? चलो हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं. Some animals spot snowball with a ladder and a pot of white paint. और कुछ एनिमल्स ने देखा कि स्नोबॉल स्पॉट करते हैं, देखते हैं स्नोबॉल को विद अ लैडर, एक लैडर लिए हुए, एंड अ पॉट ऑफ वाइट पेंट. और उसके हाथ में एक वाइट पेंट का डब्बा था. ही वॉज चेंजिंग द कमांडमेंट्स. और उस कमांडमेंट्स को बदला जा रहा था. बट ओनली क्लोवर एंड बेंजामिन रियलाइज दैट. लेकिन वो सिर्फ क्लोवर और बेंजामिन को समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है. The day after the celebration finish, they start building the windmill again. और उसके बाद से फिर windmill फिर से शुरू हो गया. Boxer is wounded, but he doesn't want to stop working. और इसमें बॉक्सर जख्मी हो गया था, और लेकिन फिर भी वो काम करना छोड़ नहीं रहा था. There appear 31 new baby pigs in AF, and they are treated differently to the rest of the animals. और फिर 31 न्यू बेबी पिग्स हो गए, और उन लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से रखा जा रहा था. स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था उन लोगों को. They get to study and to wear ribbons on Sundays. तो संडे को वो लोग वो पढ़ाई करते थे और संडे को रिबन बांधते थे. Every animal should
step aside when a pig comes to them. और जैसे कि इज्जत देना होता है, जब वो आते थे तो सारे एनिमल्स उनको रास्ता देते थे और उनको इज्जत करते थे. ये कौन पिग्स थे? These were the children of Napoleon. पढ़िए, who are the pigs? अब ये न्यू पिग्स हैं, वो कौन थे? Who are the pigs? Now the pigs get to probably when no other animal is allowed to. They get to drink beer, and Napoleon himself can eat sugar with his meals. In April, Animal Farm was proclaimed as a republic, and the only तो candidate. क्या वो कह रहा था? Now the who are the pigs? अब सवाल ये है कि the new pigs, baby pigs कौन थे ये लोग? Now the pigs get to eat barley. अब इन pigs को barley दिया जाता था. When no other animal is allowed to, और जो कि दूसरे animals को allowed नहीं होते थे. They get to drink beer, and Napoleon himself can eat sugar with his meals. और वो जो नेपोलियन था वो तो बियर भी, और उन बच्चों को भी बियर दिया जा रहा था, एंड नेपोलियन शुगर भी खा रहा था अपने खाने में, मील्स में. इन अप्रैल एनिमल फार्म वाज प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, एंड द ओनली कैंडिडेट टू बिकम अ प्रेसिडेंट वाज नेपोलियन, हु वाज इलेक्टेड. तो वो इलेक्टेड हो गया और ही बिकेम द प्रेसिडेंट. बॉक्सर इज गेटिंग ओल्ड, एंड वन डे ही फॉल्स डाउन एंड डजंट गेट अप. बॉक्सर दिनों दिन उम्र बढ़ रही थी, गेटिंग ओल्ड, एंड वन डे ही फॉल्स डाउन, वो गिर जाता है और फिर उठता नहीं है. नेपोलियन अरेंजेस एवरीथिंग. Napoleon arranges everything for him to go to a vet in Wellington. Apparently, he is not being taken to a vet, but to a slaughterhouse. और फिर वो क्या करता है, उसको कसाई खाना में भेज देता है, स्लॉटर हाउस में भेज देता है, जहाँ की उसको मार दिया जाता है. Finally, he dies 3 days later. और 3 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है. स्क्वीलर जो उसका मीडिया पर्सन जो उसका, वो ये हल्ला उड़ाता है that he has been there when boxer passed. और बोला मैं वहीं था जब बॉक्सर की मौत हुई थी, and that his last words have been to encourage the animals to keep on with the mill. और जब मरते मरते वो बोल गया कि तुम लोग जो कुछ भी हो रहा है, encourage the animals to keep on with the mill. The rumor appears that the pigs have bought a new bottle of whiskey. और फिर क्या हुआ था, बॉक्सर को बेचने के बाद जो रुपए मिले थे उसको, उससे उसने क्या किया, उसने विस्की मंगा लिया. Now read years later. Read. Year later, Murli, Blueville, मतलब Jesse, कई साल बाद, years later, काफी समय, काफी सालों बाद. are dead as well as Johnson. पूरा पढ़ो ठीक से, तुम्हारे प्रॉम्प्टर हम नहीं रहेंगे ना. Read. Yes, ma'am. Year later, बहुत साल बाद, Murli, Blueville, Jesse मुरली and किसको बोल रहा? Sorry, Muriel. Muriel. म्यूरियल कौन था? एक फीमेल हॉर्स थी. देख के बताओ क्या, देख के बताओ. बस म्यूरियल. एनीबडी? आपने लिखा नहीं था क्या कैरेक्टर? मैम वाइट गोट थी. गोट मैम. याद है, बिल्कुल आपको सामने याद रहना चाहिए. मैंने कई बार को पीपीटी शेयर की थी, Yes, कई ma'am. बार डिस्कस किया Queen मैंने. White God जो पढ़ के सुनाती थी सबको. पढ़ना नहीं आता था इसको. और वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है म्यूरियल जो है? द एजुकेटेड क्लास को. Yes, ma'am. पढ़िए 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 पढ़िए.
Muriel, Bruegel, Jesse, and Pincher are dead, as well as Johnson. Many animals had got the age of retirement, but have not done it. The यहाँ पढ़ो, male तुम खुद समझ में तुमको नहीं आएगा ऐसे पढ़ोगे तो। कोई और पढ़ो, read. Muriel, Bluebell, Jesse, and Pincher are dead, as well as Johns. Many मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ इसका? Muriel, Bluebell, Jesse and Pincher भी वैसे ही मरते हैं जैसे कि जॉन्स मरते हैं। नहीं, बताया जा रहा है इतने लोग मर गए। उसके साथ जॉन्स भी। हाँ, पढ़िए। Many animals have got the age of retirement but haven't done it. मतलब कई रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? Many animals have got the age of retirement but haven't done it. मतलब बहुत लोग रिटायरमेंट एज पार कर चुके हैं लेकिन फिर भी रिटायर नहीं हुए। The meat is finished, but it is used for milling corn, and animals are building another one. The promises snowball made them haven't been accomplished yet. The farm has become richer, but the animals haven't. Well, the pigs and dogs have. The animals know that they are usually hungry and they work a lot, but they are happy to work for themselves and not for humans. Until Clover sees squirrel walking in two legs, they all see the pig walking in two legs. The sheep learned a new song. 4 legs good and 2 legs better than 2 legs better. The new commandments was all animals are equal, but some animals are more equal than others. They pigs organize a toast with the human neighbors and congratulates the pig for the condition in which animals work. तो ये कंक्लूडिंग ऑलमोस्ट स्टोरी खत्म हो रहा है। तो कई साल बाद क्या हुआ, म्यूरियल भी चली गई, ब्लूबेल, जेसी एंड पिंचर भी मर गए, एंड जोन्स आल्सो डाइड। He also died, and many animals have become old, but they have not retired because they have to go on working. The mill is finished. Mill finished हो गया था, but it is used for milling corn, and animals are building another one. और animals कुछ एक और mill बना रहे थे. The promises Snowball made them haven't been accomplished yet. जितनी भी बातें Snowball ने कहा था, वो अभी तक वो हुआ नहीं है, इसलिए कि वो वहां पर कुछ था ही नहीं. मैम, The farm has become richer. Yes. मैम मिल क्या है मैम? Wind mill जो बना रहा था. ओ, The animals know that the farm has become richer. मतलब farm rich हो गया था, लेकिन animal में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, उन लोगों में प्रोडक्टिविटी था लेकिन वो लोग में कोई आराम नहीं था. They were becoming poorer every day. They did not get food to it. And well, the pigs and the dogs have. Pigs को खाना पूरा मिलता था, dogs को खाना पूरा मिलता था, लेकिन बाकी animals जो working animals थे, उन लोगों को कोई आराम नहीं था. The animals know that they are usually hungry and they work a lot. उनको पता था कि वो अक्सर वो भूखे ही रहेंगे और भूखे रह के उनको बहुत काम करना पड़ता था. But they are happy to work for themselves. फिर भी लोग खुश थे कि चलो हम लोग मिस्टर जोन्स के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हम लोग अपने लिए कर रहे हैं. And not for humans. Until Clover, एक दिन क्लोवर ने क्या देखा? क्लोवर कौन है? क्लोवर इज अ फीमेल हॉर्स. क्लोवर देखती है कि स्क्वीलर वॉकिंग इन टू लेग्स. इंसानों की तरह वो स्क्वीलर था, वो भी 2 पैर पे चल रहा था, जबकि स्लोगन में था कि 2 legs good, नो 2 legs bad and 4 legs good. लेकिन वो लोग 2 पांव पे चलने लगे थे, तो स्लोगन बदल दिया उन लोगों ने. They all see the pigs walking. सारे के सारे पिग थे, वो लोग कपड़े पहनने लगे थे, बेड पे सोने लगे थे. तो सारे जो स्लोगन उन लोगों ने बनाया था, सारा कुछ बदल दिया. और फिर एक नया स्लोगन बना जिसमें था 4 legs good, 2 legs better. The new commandment was all animals are equal. सारे animals equal हैं, यहाँ तक था. अब इस न्यू कमांडमेंट को बढ़ा दिया गया, but some animals are more equal than others.
they organize a toast with the human neighbors, और फिर वो लोग बाहर में जाते हैं और पिग्स जो ह्यूमन कपड़े पहनते हैं, 2 पांव पे चलते हैं, वो लोग बाहर में जाते हैं पिल्किंगटिंग के साथ, congratulate the pigs for the condition in which animal works, और एक पार्टी कर रहे हैं, एक बार में जा रहे हैं जहाँ पे लोग बैठ के ड्रिंक करते हैं, तो पिग्स भी ड्रिंक कर रहे हैं और ह्यूमंस भी ड्रिंक कर रहे हैं, और पिल्किंगटन जो उनका नेबर था उसको बधाई दे रहा है, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है कि एनिमल फार्म ने बहुत अच्छा काम किया, तो जो कंडीशन एनिमल फार्म का है वो बहुत अच्छा वो लोग काम कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट द एनिमल्स, द कंडीशन आफ्टर मेनी इयर्स. पढ़ लो, एंडिंग पढ़ लो, आज खत्म करते हैं इसको. And he says this method will be used in other farms and that the ration of food are good. The pigs keep on changing customs and traditions, such as the flag, Sunday meetings, the adoration for the measure, and so on. He even changed the name of the farm to Measure Farm. Again, the meeting between pigs and men doesn't हाँ, ये एंडिंग है. और जब ये पिग्स एनिमल्स देखते हैं कि ये बार में बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं और वहां बातें क्या हो रही है कि सेज दैट मेथड विल बी यूज्ड इन अदर फार्म्स, कि आपने जो इतना अच्छा काम किया है, द सेम मेथड विल बी यूज्ड इन अदर फार्म्स. और जो राशनिंग जो कर रहे हैं आप फूड का वो बहुत अच्छा है, मतलब एनिमल्स को जो भूखा रख रहे हैं, राशनिंग जो कर रहे हैं, दैट इज गुड. द पिग्स कीप ऑन चेंजिंग कस्टम्स, और वो हमेशा कुछ कुछ अपने अनुसार चेंज करते रहते हैं, such as the flag बदल लेते हैं लोग, संडे मीटिंग बदल देते हैं, और the adoration of the old major and so on. और काफी चीज जो पहले का था वो हटा रहे हैं और नई चीजों को लोग ला रहे हैं. And even change the name of farm to manure farm. और फिर वापस क्या करते हैं, एनिमल फार्म को हटा करके, इसलिए कि वो लोग खुद इंसान बन गए थे ना, सारी कुछ इंसानों वाली बात हो गई थी पिग्स की, और नाम तक बदल दिया, वापस फिर कर दिया मैन्योर फार्म अगेन. एंड इतना कुछ देखना था कि एनिमल्स जो बाहर से देख रहे थे कि व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड, तो वो लोग फिर से रिबेल करते हैं, बगावत पर उतर जाते हैं, और वो लोग तेजी से बार के अंदर घुसना चाहते हैं और फिर से पिल्किंगटन को और अटैक करते हैं नेपोलियन को. एंड फिर वापस इन द एंड वही होता है कि एनिमल्स फिर से टेक ओवर कर लेते हैं, ये कहते हुए कि मिस्टर जोन्स तो अब नहीं है, दुनिया में नहीं है, लेकिन कम से कम वो जब देते थे फूड तो यूज्ड टू गिव टू एवरीबॉडी, और नहीं दिया है तो किसी को नहीं दिया है. कम से कम इस तरह की इतनी करप्शन नहीं थी जितना कि नेपोलियन कर रहा है. तो यहाँ पर ये लेसन खत्म होता है. एनिमल फार्म सिंपल है टेल, लेकिन विद अ वेरी डीप मीनिंग, जो कि आप इसको, मैं आपको अब तो फिनिश हो गया है तो समरी आपको सेंड कर देंगे, और जो पीपीटी है वो भी हम सेंड कर देते हैं आपको. आपका ईमेल आईडी मेरे पास होगा ही, तो हाँ, तो आई विल बी सेंडिंग दिस टू यू. एनी क्वेश्चन यू हैव? और सिंस ये लास्ट था लेसन आपका, इसमें कुछ एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम लोग करेंगे अब. और फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस है, फिर एक बार पूरी रिकैप करेंगे शुरू से. तो देखिए कितने, हमको लगता है 2 months में द सिलेबस इज कंप्लीटेड, नो? तो सेकंड सेमेस्टर, सेकंड ईयर का बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी था, है कि नहीं? स्टोरीज कोई पोएट्री झंझट वाली बात नहीं, जो कि फर्स्ट ईयर में बहुत बहुत वास्ट था, बाप रे, खत्म ही नहीं हो रहा था. वो लगता है कि कभी खत्म होगा कि नहीं पता नहीं, इट्स वेरी लॉन्ग. आपसे पहले शुरू किया मैंने फर्स्ट ईयर का, अभी भी BSc-IT फर्स्ट ईयर, वो अभी आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड बजट अवेयरनेस. और देखिए आपका 2 months में ऑलमोस्ट डन हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से डन हो गया. अब आपके हिसाब से तो आप बताइएगा कि क्या समझ में आया क्या. तो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और बाकी रिवाइज करेंगे ताकि आपको यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग. प्लस मैंने ये भी सोचा कि आपको कुछ और देंगे ताकि
एडवांस तो आपको ऑलरेडी ग्रामर मिल ही रहा है, बट आई विल टेक यू टू, लाइक मैंने प्रॉमिस किया था बीसीए के को कि फ्राइडे को हम लोग करेंगे एमसीक्यूज और कॉम्प्रिहेंशन एंड इंटरव्यू स्किल्स पे स्टार्ट करेंगे आपका। यस यस मैम। यस मैम, फ्राइडे को मैम। यस मैम। वो शुरू करेंगे, लेकिन मेरा टारगेट था कि पहले सिलेबस हो जाए ओवर, और सिलेबस इतना ही नहीं है, इसके बाद ग्रामर स्किल्स है जो कि ऐसे राइटिंग है, प्लस आपका वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो फर्स्ट ईयर में था, और इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो भी देखना होगा, तो वो भी कराएंगे, एंड देन वील रिकैप, एंड फ्राइडे को जो मैंने प्रॉमिस किया आपको वो रहेगा। 2 दिन रिवाइज करेंगे हम लोग, और फिर एक दिन एक्टिविटीज करेंगे, वही तो है।